From K-pop to Korean dramas, it has really helped them to increase the interest in their Korean beauty products because of. Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new, welcome to my channel. My name is Pratiksha and today's video is all about the Korean skincare, how you can achieve naturally. So let's get started to that. First thing is hydration. So I know you must be thinking it's the last time भी यही बोला था and अभी भी यही बोल रही नहीं. Let's talk about the Korean perspective now. So Korean beauty is more about their hydration. Like they will apply the more lightweight layers of moisturizer such as from their toners, moisturizers, serums, essence. तो ये सारे जो प्रोडक्ट है इसमें एक चीज कॉमन रहेगी जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो मॉइस्चराइजर देयर हाइलोनिक एसिड इफ यू टॉकिंग अबाउट देयर टोनर दे विल इंक्लूड द योर एलोवेरा जेल योर हाइलोनिक एसिड रोज वाटर these are like moisturizer ingredient. So essence, if you're talking about that, it is like applied after toning and before moisturizing your skin. See, I'm not using any essence. I was not aware because when I started searching about it, about the skincare, about the 10 step, it obviously it is viral on the internet. So when I started about it, then I got to know it's not about the product what they're using. Mainly it's also about their genetic difference, their environment, air pollution, that also matters, you know. So Korean people are like a dry skin people, so they more focuses on the hydration. So in everything they will apply some hyaluronic acid ingredient in their product. But Indian people are like they are facing the acne or they will face the hyperpigmentation. So they more focuses on their brightening the skin or reducing the dark spots. So we are more exposed to sun. So obviously the skin is different, the skin type is different. So definitely the skin care obviously it should be different. तो जो भी कोरियन स्किन केयर का जो भी वो लोग यूज़ करते हैं वो हमारे ऊपर अगर वर्क नहीं हो रहा है obviously the genetic matters, as I said, the environment matters. So don't just blindly follow their products. That's all about the outer part of the skin. You have to apply the moisturizer. If you can't apply the moisturizer, I think so I would say include the hyaluronic acid on your skin at least in a morning routine or night, whatever way it is possible for you. So this is all about the outer skin. What about the inner? Because without drinking the plenty of water or without drinking 2 to 3 liters of water in a day, you apply anything, you apply moisturizer, you apply hyaluronic acid, it is not going to work. So at least drink 2 to 3 liters of water and include the water rich fruits like cucumbers, strawberries, your oranges. They are not like ये hydrate ही नहीं करता skin पे. They are like very rich in vitamins and antioxidants. So consume the fruits is like very important for the glowing skin. So include that too. So second thing is hygiene. See, you have to wash your face daily, at least twice in a day, okay? Because and when you're washing it, when you're obviously after washing you are going to dry that face, but उसके लिए soft towel लेना, soft कपड़ा लेना. I'm not saying towel नहीं है तो towel लाओ, नहीं, कुछ भी soft कपड़ा कुछ भी हो वो, that you can use it and don't rub it. अगर वॉश करने के बाद ऐसे डायरेक्टली रब नहीं करना स्किन पे, पैट करके you can dry your skin and obviously वो टॉवल सेपरेट रखना. So जो फेस का टॉवल है वो अलग रखो और बॉडी ड्राई करने का जो टॉवल होता है वो अलग रखो. बॉडी ड्राई करने के टॉवल से फेस ड्राई मत करो obviously. So second thing in hygiene is आप अगर घर पे आ रहे हो आफ्टर योर 15 minutes 30 minutes आप नीचे जाके आ रहे हो, वॉश योर हैंड एंड वॉश योर फेस. अगर आप 8 to 9 hours बाहर हो then wash your hand first, cleanse your face. You can use a micellar water, cotton pad, उससे आप फेस पे रखो and then you can see the dust and whatever जो भी गंदगी है वो आपको cotton pad पे दिखेगी and then you do a face wash at least for 30 seconds. ठीक है, ये करो. आप कभी भी बाहर जाते हो फर्स्ट हैंड को वॉश करो एंड देन यू टच योर फेस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिलोज. बिकॉज आप जब सोते हो ऑब्वियसली पिलोज पे तो वो भी उसके वजह से भी एक्ने होते हैं. तो आपके जो पिलो केस है, पिलो के कवर्स है, वो चेंज करो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक. वो बहुत ही ज़रूरी है. आप सिल्क एंड सैटिन का भी कवर यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही बेनिफिट देता है आपके हेयर को और आपके फेस को. बट फाइन, मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल कवर ही यूज़ कर दो बट चेंज इट ट्वाइस इन अ वीक. ठीक है, बिकॉज उस पर भी ऑयल होता है, डस्ट होता है, जो भी आपका स्वेट होगा ऑब्वियसली वो उस पर जाएगा. एंड देन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट कवर फॉर अ वीक और फॉर अ व्हाटएवर पीरियड, देन वो आपको इम्पैक्ट करेगा आपके फेस को. सो एटलीस्ट चेंज ट्वाइस इन अ वीक योर पिलो केस.
एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, हेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है पिलो केसेस चेंज करना, बिकॉज बेनिफिट्स है उस. एंड डोंट टेक द हॉट शावर गाइज. हॉट शावर से अगर आई डोंट, आप अगर शावर भी ले रहे हो तो आपके फेस को प्रोटेक्ट करो पता नहीं कैसे, बट हॉट शावर से डिहाइड्रेट होता है स्किन एंड उसकी वजह से स्मॉल स्मॉल बम भी फेस पे आ सकते हैं. एंड उसके बाद अगर इफ़ यू आर गोइंग टू यू नो यूज़ द एनी क्लोथ और सॉफ्ट क्लोथ एंड यू आर गोइंग टू रब इट, तो ऑब्वियसली स्किन को इफेक्ट होगा. तो जब भी आप फेस वॉश करो या आप बात करने के बाद अगर आप स्किन को ड्राई कर रहे हो, स्पेशली फेस को, तो टैप टैप you know you can pat it smoothly and then you can dry it out. So third thing is have a healthy food. You know, Korean people are not just rely on their skincare routine or the fancy skincare products. They have a healthy food. They maintain their diet. You know, one of the famous dish in a Korean or South Korea is kimchi. You know kimchi. I think so everybody, most of the people know what is kimchi. वो किससे बनता है? यू नो कैबेज एंड रेडिश. यू नो कैबेज इज गोभी. हम गोभी की सब्जी खाते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं. किसको पसंद है ना? बट खाओ अगर आपको पसंद है, वेल एंड गुड. बट कैबेज अगर आप भाजी सब्जी नहीं खा सकते, देन यू कैन हैव इट एज अ सलाड. यू नो वो भी अच्छा लगता है. थोड़ा सॉल्ट डालो ऊपर से, दैट ऑल्सो टेस्ट गुड. बट हैव अ वेजिटेबल, हैव अ गुड वेजिटेबल्स विच इज़ रिच इन विटामिन. स्वीट पोटैटो भी बहुत हेल्थी होता है. वो लोग ऑब्वियसली कंज्यूम करते हैं. आपने देखा होगा वो रील जिसमें पोटैटोज वो लोग खाते हैं ऐसे रोल करके, बिकॉज इट इज़ वेरी हाई इन विटामिन ए. विटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थी स्किन गाइज. एंड फॉर द चिया सीड्स इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज़ वेरी गुड फॉर मॉइस्चराइजिंग द स्किन. यू नो स्पिनच भी बहुत वो लोग कंज्यूम करते हैं. स्पिनच इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, आयंस. सो सी फूड सूप अगर वो आप ये लोग नहीं कंज्यूम कर सकते, एटलीस्ट अपना बीटरूट, गाजर, मुड़ा, मेथी, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, योर पालक, दैट यू कैन कंज्यूम इट, राइट. सो हैव अ हेल्दी फूड. अगर आपके, मैंने पहले भी बोला, अगर आपका गट और आपका अंदर का सिस्टम ही क्लीन नहीं है, व्हाटएवर प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द स्किन, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इट. सो at least have a healthy food. Fruits, nuts, they are like very good for health. Consume it, you will see the difference. And then if you're going to apply the product on top of it, definitely it is going to give the result. But until or unless you know stop using the refined sugar, maida, it is not going to help you. Outer way, if you're going multiple products, until or unless you clean your gut, it is not going to give you a result. So have a healthy food. Okay, so fourth thing is exfoliation. So exfoliation is like it removes the dead skin, unclog the pores. Like there are two ways you can exfoliate, your physical exfoliation and chemical exfoliation. So what is the physical exfoliation is like, you will take the rice powder and water, and then you will mix it and then you will apply on the face. After 15-20 minutes you will scrub it. Okay, you scrub it by your hand and then you will wash your face. That is a physical exfoliation. Now let's talk about the chemical exfoliation. So chemical exfoliation means it dissolves the dead skin instead of scrubbing. So AHA, BHA, 1. So AHA is like your glycolic and lactic acid, and BHA is like salicylic acid, which works deep within the pores to clear out your oil and prevents the acne. So this is the ordinary one, AHA, BHA. So this one I'm using once in a week and not like every week. It depends on your skin. If you don't want to use the chemical exfoliation, you can go for the physical exfoliation. वो ज़्यादा safe है. मैं भी पहले यही यूज़ करती थी, उसके बाद I opt for this chemical exfoliation. But you can do physical exfoliation as I said. एक जो राइस का पाउडर होता है वो ले लो, डीमार्ट से आप पाउडर का पैक आता है, दैट यू कैन बाइट एंड देन वो वाटर के साथ मिक्स करके यू कैन अप्लाई द पेस्ट. वेट फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन यू रब इट, स्क्रब इट. बेसिकली वो पार्टिकल्स राइस के जो होते हैं उससे पूरा जो डेड स्किन होता है वो निकलता है. ठीक है, अगर आपको राइस का पाउडर बाय नहीं करना है, यू कैन डू दैट एट होम. यू नो जो तांदुल होते हैं उसको थोड़ा ड्राई आउट करो, वॉश करो पहले अच्छे से, एंड देन यू ड्राई इट आउट एंड देन यू कैन यू नो मिक्सर से आप उसको बारीक कर सकते हो. तो that paste you can keep it, that powder you can keep it, and then you can apply once or twice in a week. That is a good you know physical exfoliation, because rice के भी benefits है बहुत, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो actually work करता है. So exfoliate your skin at least twice in a week.
anything. If you have this AHA BHA chemical, then fine, or you can do the rice powder mixture and then you can do that. So next thing is sunscreen. Let's talk about it. So sunscreen are basically used to prevent from UVA and UVB, your aging and your burning rays, and it is like based on your skin type. As I said, you can apply that, and it is applied in the morning. Avoid in the night, there is no need of it. Apply in the morning when you're going out, or when you're sitting at home and facing the sun, then you can apply it. You can apply it that time as well. But when you're going out, at least apply the sunscreen after moisturizer. Include that in the morning routine. You will start seeing the difference. So I'm not going to elaborate more about the sunscreen, because you guys are aware why sunscreen is important, because Indian people are more exposed to sun. So whether it is winter, whether it is summer, you will face sun. So even for rainy season, not for some period of time, definitely you will not face, but apply sunscreen. Okay, so last but not the least, you exercise and yoga. So in Korea, the K-pop is very famous trend. Not in Korea, globally it is very famous. It is actually help to strengthen the muscle. It improves the flexibility. It improves the coordination, health. It is very beneficial. Okay, if it is not possible to you, at least go to the gym. It is not possible to go to gym, do yoga at least 30 minutes, because आप अगर movement नहीं करोगे, it is not going to work. आपको sweat निकालना है. For that, at least go to gym or do yoga. It is very good for the health. K-pop से याद आया, from K-pop to Korean dramas, it has really helped them to increase the interest in their Korean beauty products, because obviously हम कोरियन ड्रामास देखते हैं, तो हर एक एक्टर जो भी रोल प्ले कर रहे हो, दे हैव रियली डूई एंड दे हैव रियली स्मूथी फ्लॉलेस स्किन. यार ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट आता है ये कैसे हो सकता है. हर एक एक्टर के, हर एक कैरेक्टर के वो स्किन होती है. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट. Okay, you have to have the healthy food, you have to do the exercise, you have to drink the water, and after that your moisturizer, your sunscreen, then it is going to work. Okay, so have a exercise, have a good sleep. Stress जो लेते हैं, obviously stress कोरिया में भी रहेगा सबके लाइफ में, but how you gonna manage that is important. And have a healthy diet, have a healthy life, and then definitely you're going to achieve it. Okay, so that's it for this video. I hope you like this. If you do, then please like this video and subscribe to my channel. Till that time, have healthy food and stay happy. Bye.